Assalamu alaikum, my UT fam jam. How are you guys? Alhamdulillah, today is the last day of me deep cleaning my cabinets. So let's get started. The cabinet I'll be tackling first is this one. अच्छा यहाँ पे जितने भी cabinets जो remaining है they are not that messy except two of them. एक ये है एक दूसरा वाला cabinet है. Rest all of them are pretty sorted. So anyhow as usual I remove everything. I start cleaning, scrubbing, getting rid of all the dust, debris, all the thing which was getting compiled and मैंने जितने भी मेरे कंटेनर्स थे उन सबको मैंने स्टेरलाइज वॉश करके रख दिया ऑल प्रेप्ड एंड रेडी फॉर रमदान इसमें चटनियाँ स्टोर करके रखना है या जो भी मसाले बना के रखना है दे आर ऑल एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ मैंने ज़्यादा कुछ भर के नहीं रखा है दे आर जस्ट some cleaning products and all of that and a bit of extra appliances right in the corner. नाउ दिस इज द वन जो थोड़ा सा मेसियर है इसको मुझे थोड़ा डील करना है नाउ ये वाला जो कैबिनेट है ये काफ़ी मेसी है क्योंकि इसको मैं यूज़ भी बहुत करती हूँ देयर लॉट ऑफ ट्रेज एंड स्पून्स एंड कटलरीज एंड ऑल ऑफ दैट एंड मेरे पास बहुत अमेजिंग मिट्टी के मटके हैं जिसमें मैं खीर जमाना बहुत पसंद है मुझे सो नाउ यू हैव सीन जो नीचे वाला जो कैबिनेट है इसमें जो हमने न्यूज़ पेपर बिछाया था इट गॉट स्टक सो हैड टू लाइक लिटरली डू अ बिट ऑफ स्क्रब टू गेट rid of that. Now they're nice and clean and all stored back in place and this again will be used a lot during the month of Ramadan. नीचे मैंने बहुत easy access में बहुत सारे jugs रखे हुए हैं so that मैं रूह अफ़ज़ा बना के रख सकूँ उसको. And now this cabinet is not that messier because barely anything is kept and we do keep cleaning it every week. So इसको मैं वापस बंद कर दूँगी. ये एक कैबिनेट है जो पूरे किचन में आई फील एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ बिकॉज इसमें मेरे बहुत सारे क्रॉकरीज रखे हुए हैं बेसिकली नॉट जस्ट माई मदर्स क्रॉकरी एंड आई लव देम सो इसको भी क्वाइट रिसेंटली बिफोर आई स्टार्ट इन माई सीरीज इसको हमने ऑलरेडी क्लीन किया था सो आई एम नॉट गोइंग टू रीटच इट बिकॉज इसमें बहुत सारे बर्तन हैं बहुत सारे एंड यू कैन सी दे आर माई प्राइज्ड पोजेशन. Alhamdulillah, thank you for joining in. It was lovely showing you guys. Until next time, Assalamu alaikum.